Hello everyone. Now in our structure mechanics 1, structure analysis 1, today we are going to see some example on deflection of cantilevers, double integration method or Macaulay's method. So in our second chapter is displacement of determinate beam and plane truss. So in a previous video we showed that some formula of cantilever beam. ठीक है. So first of all, method for slope and deflection at a point. So there are several methods to find the slope and deflection of the center line of a beam at a certain section. The following are important from the subject point of view: double integration method or Macaulay's method, moment area method, conjugate beam method, unit load method. It is also known as strain energy method. So double integration method, we have already derived a differential equation. We have ei d square y by dx square equal to minus m. Integrate it, so we have ei dy by dx is equal to minus integration m into dx plus c1. It is slope. Integrating once again, ei into y is equal to minus double integration m into dx plus c1x plus c2. It is deflection. So thus integrating the original differential equations once, we get slope, and integrated it further, we can get value of deflection at any point. So deflection of cantilevers. So cantilever with a point load at a free end. So formula for a theta b, slope is wl square upon 2 yb equal to wl cube upon 3ei. Cantilever with a uniformly distributed load w throughout the span. So equation is theta b is equal to wl cube upon 6ei, yb equal to wl raised to 4 upon 8ei. Cantilever with a point load not at the free end. So formula slope theta c is equal to wl1 square upon 2ai, yc deflection is equal to wl1 cube upon 3ei. Now cantilever partially loaded with UDL over a length L1 from the fixed end. Theta c is equal to wl1 cube upon 6ei, yc is equal to wl1 raised to 4 upon 8ei. Cantilever partially loaded with UDL from free end. So in this case, deflection at any point may be calculated using principle of superposition. So the deflection at B may be determined as due to the independent defect of the following load system: when the whole span is loaded from A to B, when an upward UDL of W per unit turn is acting for the portion AC. So theta B is equal to wl cube upon 6ei minus wl1 cube upon 6ei. yb is equal to yb1 minus yb2. So wl raised to 4 upon 8ei minus in bracket wl1 raised to 4 upon 8ei plus L minus L1 wl1 cube upon 6ei. Then after cantilever with uniformly varying load with a maximum intensity W at a fixed end, so theta B is equal to wl cube upon 24 ei radian, yb equal to wl raised to 4 upon 30 ei. Now cantilever with moment at a free end. So at theta B is equal to ml upon ei, yb equal to ml square upon 2ei. So now example on deflection of cantilevers, double integration method, Macaulay's method. Example 1. So a cantilever
3 meter long, carries a uniformly distributed load over the entire length. If the slope at a free end is 1 degree, find the deflection at the free end. फाइंड द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ड्रॉ द कैंटिलीवर बीम. ठीक है, जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से हम कैंटिलीवर बीम ड्रॉ करेंगे. सो अ कैंटिलीवर बीम 3 meter long, carries a uniformly distributed load over the entire length. If the slope at free end is 1 degree, find the deflection at the free end. So first of all, draw the cantilever beam. So cantilever beam is one end fixed, another is free. UDL acting on it. So UDL L equal to 3 meter. UDL is equal to W kilonewton per meter. So slope at B, so theta B equal to 1 degree, so it is pi by 180 radian. Theta B is equal to 1 degree is equal to pi by 180 radian. So we have W L cube upon 6 EI, W L cube upon 6 EI, so it is equal to pi by 180. So W equal to pi by 180 multiplied by 6 EI upon L cube. Now deflection at B, YB is equal to WL raised to 4 upon 8 EI. Deflection at point at B, YB equal to WL raised to 4 upon 8 EI. So pi by 180 multiplied by 6 EI upon L cube multiplied by L raised to 4 upon 8 EI. So YB is equal to pi by 180 multiplied by 6 by 8 multiplied by 3000. So it is 39.27 mm. ठीक है, so in this way we can find slope and deflection. So हमें क्या करना है, जो गिवन डेटा है उस डेटा के हिसाब से हमें बीम ड्रॉ करना है. ठीक है, देन बीम ड्रॉ करने के बाद हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी गिवन डेटा है, इट इज़ कैंटिलीवर बीम. सो ड्रॉ द कैंटिलीवर बीम, वन एंड फिक्स अनदर फ्री. 3 मीटर स्पान, सो डिनोट करो 3 मीटर लॉन्ग स्पान. UDL एक्ट हो रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर. ठीक है, सो थीटा बी हमें दिया गया है, इट इज़ पाई बाई 180 रेडियन. सो स्लोप at B, theta B equal to W L cube upon 6 EI. W L cube upon 6 EI is equal to pi by 180. So हमें W मिल जाएगा तो pi by 180 मल्टीपाई बाई 6 EI L cube. हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिफ्लेक्शन एट अ फ्री एंड. डिफ्लेक्शन फाइंड करना है. सो वी हैव फॉर्मूला फॉर दैट, YB equal to W L raised to 4 upon 8 EI. So we have W, so W is equal to pi by 180 multiplied by 6 EI upon L cube multiplied by L raised to 4 upon 8 EI. So pi by 180 multiplied by 6 by 8 multiplied by 3000. Simplified it, so it is 39.27 mm. 39.27 mm it is YB. Now next example is determine slope and deflection at a free end of a cantilever as shown in figure. Take E equal to 200 gigapascal, I equal to 150 multiplied by 10 raised to 8.
mm⁴। क्या डिटरमाइन करना है हमें? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। किसके लिए? कैंटिलीवर बीम, जो फिगर में दिया गया है। ठीक है, ई हमें लेना है 200 गीगापास्कल, आई लेना है 150 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ mm⁴। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट क्या करना है हमें? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, हियर ई इज गिवन, ई इज 200 गीगापास्कल, सो गीगापास्कल कन्वर्टेड इनटू न्यूटन पर mm², सो 200 मल्टीप्लाई बाई 10³ न्यूटन पर mm², 200 मल्टीप्लाई बाई 10³ न्यूटन पर mm²। we have value of I is equal to 150 10⁶ mm⁴, 150 multiplied by 10⁶ mm⁴. So cantilever beam with a point load on it, length of the beam is 2 meter. So find out theta b. Theta b is equal to W1 L square upon 2 EI प्लस W2 L1 स्क्वायर अपन 2 EI। ठीक है, 2 पॉइंट लोड है। ठीक है, पॉइंट लोड की वजह से स्लोप आएगा। सो पुट ऑल द वैल्यू इन इक्वेशन। सो W इज इक्वल टू 20 इंटू 10³ 20 इंटू 10³ मल्टीप्लाई बाई 2000 स्क्वायर। टोटल लेंथ क्या है? 1 मीटर, सो इट इज 2 मीटर, सो 2000 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई इज इक्वल टू 210³ प्लस 150 इंटू 10⁶ प्लस W2 कितना है? 30 मल्टीप्लाई बाई 10³ मल्टीप्लाई बाई 1000 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 210³ मल्टीप्लाई बाई 150 मल्टीप्लाई बाई 10⁶। सिंप्लीफाइड करेंगे, सो फर्स्ट वैल्यू इज 1.33 10⁻³ प्लस 5 इंटू 10⁻⁴। सो इट इज 1.83 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ रेडियन। नाउ थीटा भी फाइंड आउट हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे वाई बी। सो वाई बी इज इक्वल टू W1 L³ अपन 3 EI प्लस W2 L1³ अपन 3 EI प्लस L माइनस L1 W2 L1 स्क्वायर अपन 2 EI। ठीक है, वाई बी इज इक्वल टू वाई सी प्लस L माइनस L1 इंटू थीटा सी। सो वी हैव W इक्वल टू 20 इंटू 10³ multiply by length 2 meters, so 2000 cube divided by 3 into 200 multiply by 10³ multiply by 150 into 10⁶ plus W2 it is 30 10³ multiply by 1000³ divided by 3 into 200 multiplied by 10³ multiplied by 150 multiplied by 10⁶. L minus L1, so it is plus 200 minus 100 multiplied by 5 10⁻⁴. So 1.78 plus 0.33 plus 0.5. So YB equal to 2.61 mm. ठीक है, सो अल्टरनेटिव मेथड बाय बेसिक प्रिंसिपल मैकॉलिस मेथड हमें कंसीडर करना है सेक्शन एक्स एक्स एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम बी। सो एम एक्स इक्वल टू -20x -30 इन ब्रैकेट x -1। सो ई आई इंटू d² by dx² इक्वल टू -mx। सो इट इज 20x प्लस 30 इन ब्रैकेट x -1। इंटीग्रेशन करेंगे, सो ई आई इंटू dy by dx इज इक्वल टू 20x² 2 प्लस c1 प्लस 30x -1² 2। नाउ व्हेन x इक्वल टू 2 dy by dx इक्वल टू 0,
0 is equal to 20 into 2 square by 2 plus C1 plus 30 2 minus 1 whole square divided by 2. So C1 is equal to minus 55. So EI into dy by dx equal to 10x square minus 55 plus 15 in bracket x minus 1 square, it is slope. Integrating again, so EI into y equal to 10x cube by 3 minus 55x plus C2 plus 15x minus 1 cube by 3. Put x equal to 2, y equal to 0. So C2 is become 78.33. Now EI into y, so 10x cube by 3 minus 55x plus 78.3 plus 5 in bracket x minus 1 cube. It is deflection, so for a slope at B, put x equal to 0. So EI into dy by dx equal to minus 55. So dy by dx equal to minus 55 EI kilonewton meter cube. So it is minus 1.83 10 raised to minus 3 radian clockwise. For deflection at B, put x equal to 0 in the equation 2. So EI into y equal to 78.53. So y equal to 78.53 upon EI kilonewton meter cube. So 78.53 multiplied by 10 raised to 12 Newton per mm square, Newton into mm cube, divided by 200 multiplied by 10 cube multiplied by 150 into 10 raised to 6. So y equal to 2.617 mm. So in this way we can find slope and deflection of given cantilever beam.